Hello students, welcome to my channel Hans Commerce Tutorial for the lectures on commerce, accounts, finance and management. My suggestion to you, before watching the video, please go to the description below my video. You'll find a link there. Take a printout of the problems given in the link and keep it ready before watching the video so that you can be able to understand the problem, the solution and the explanation to get the maximum benefit from the lectures. Thank you. Hello students, come on, we'll start the problem number 21st. So already we have completed 20 problems on measure of dispersion. Different type of problems we have done: range, quartile deviation, mean deviation, and we have just started standard deviation. So these are all the techniques of dispersion. So most commonly used technique of dispersion is standard deviation. Comparatively, standard deviation is more widely used. So 21st problem, hope everybody have taken the printout of all the problems from the link which I have given. Without that, it will be very difficult for you to understand the solution. So my suggestion, before watching the video, go to the link in the description below my video. In the description, go to the link and get a printout of all the problems. I'm reading out the problem. 21st. Calculate coefficient of variation. The coefficient of variation is a relative measure of dispersion. So coefficient of variation का formula is standard deviation divided by mean into 100. So for calculating coefficient of variation, we require two items: the arithmetic mean and also the standard deviation. So calculate the CV. X values are given 10, 20, 30, 40, 50. It's an individual series. So see the solution here. Calculation of coefficient of variation. X values are given in the problem 10, 20, 30, 40, 50. So summation X, if you calculate 150. 150 is the summation X. Now mean ka formula is summation X by N for individual series. For individual series, the formula for mean is summation X by N. So summation X is 150. N ka matlab number of items, number of values. So 5 values are given: 1, 2, 3, 4, 5. Summation X by N, 150 by 5, 30. So we are getting a whole number. The actual mean is in whole number. So we can take the deviations from whole number. Small x. We'll use the symbol small x denoting that we have taken the deviations from actual mean. So small x is equal to capital X minus x bar. X bar is the mean. This mean is known as x bar. So 30, x bar is 30. So x minus 30. 10 minus 30, you'll get minus 20. 20 minus 30, minus 10. 30 minus 30, 0. 40 minus 30, 10. 50 minus 30, 20. So we have calculated the deviations. Deviations of individual values from the actual mean. Now square. X को square कर देंगे. 20 को square करेंगे तो 400. 20 into 20. 10 into 10. 10 को square कर दिए 100. 0 square 0. 10 square 100. 20 square 400. Now take the total of x square, you will get 1000. 1000. Now we apply the formula for standard deviation when deviations are taken from actual mean. When deviations are taken from actual mean, the formula for sigma standard deviation is summation x square by n under root. Summation x square we got 1000, n is 5 under root. So 1000 divided by 5, then under root. After root you are going to get 14.142. So 14.142 is the standard deviation. And how much is the mean value? 30. Once we get the standard deviation and mean, easily we can find out coefficient of variation. So CV, coefficient of variation is equal to sigma by x bar into 100. 14.142 divided by 30 into 100. You will get 47.14%. This is the coefficient of variation. That's all. So this is problem number 21. Now see the 22nd, problem number 22. The table gives the marks obtained by 10 students in a certain class. Calculate the standard deviation.
So we are given roll number 1, 2, 3, 4 up to 10 roll numbers are given. For each student one roll number is there. The marks scored by first roll number 43. Marks scored by second roll number 2. 48. Roll number 3, 65. We are not concerned with roll number. We are concerned with calculating the marks. हमको जो क्या चाहिए? Standard deviation of marks. We are concerned with calculating standard deviation of marks. It is individual series. Calculation of standard deviation. Roll numbers. 10 roll numbers are there. So 10 students. N is equal to 10. X marks. The marks are given in the problem. I have copied down all the marks of 10 students. The total of the marks summation X is 525. 525. तो मीन का फॉर्मूला है summation X by N. 525 divided by 10, 52.5. यहाँ पर actual mean we are getting in fraction. Here actual mean was in whole number. When actual mean was in whole number, we have taken the deviations from actual mean. But here we are getting actual mean in fraction. So it will be better to save the time. We can take the assumed mean. Let the assumed mean be 50. Now you will get the doubt in your minds. Why I have taken 50? So you can take any value of 50. But if the value assumed mean, if it is very near to the actual mean, the calculations will be less. अगर एक्चुअल मीन के बिल्कुल करीब वाला वैल्यू अज्यूम करेंगे तो फिर हमारा आंसर करीब रहेगा. यहां पर 100 भी ले सकते हैं. यू कैन टेक एनी मीन एज अज्यूम मीन. जो चाहे वो ले सकते हैं. जितना ज्यादा दूर वाला वैल्यू लेंगे कैलकुलेशंस उतने ज्यादा हो जाएंगे. इन ऑर्डर टू रिड्यूस द टाइम, इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशंस, टेक एनी वैल्यू विच शुड बी नियरेस्ट टू द एक्चुअल मीन. एक्चुअल मीन के करीब वाला वैल्यू लेना. अब यहां पर 52.5 है, इसके करीब वाला वैल्यू 50. तो आई हैव टेकन assumed mean 50. नाउ वी हैव टू टेक द deviations from assumed mean. तो मैं यहां पर d लिख रहा हूं. यहां पर x लिया था तो x का मतलब deviations are taken from actual mean और d का मतलब deviations are taken from assumed mean. अब x minus a stands for assumed mean. a कितना है? 50 है. तो x minus 50 है. 43 minus 50 minus 7, 48 minus 50 minus 2, 65 minus 50, 15, 57 minus 50, 7, 31 minus 50 minus 19, 60 minus 50, 10, 37 minus 50 minus 13 minus 2, 28, 8. ये पूरे d के वैल्यूज. अब स्क्वायर करेंगे d स्क्वायर. ये सारे वैल्यूज को स्क्वायर. 7 sevens are 49, 2 twos are 4, 15 square 225, 7 square 49, 19 square 361. देखिए माइनस को जब स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है. माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस. व्हेन यू स्क्वायर एनी वैल्यू ऑल द वैल्यूज विल गेट पॉजिटिव. चाहे नेगेटिव भी रहेंगे तो पॉजिटिव हो जाते हैं. माइनस इंटू माइनस प्लस. ये पूरे को स्क्वायर कर लिए, इसका टोटल कर दिया 1809. 1809 इज द समेशन डी स्क्वायर और समेशन डी 25. अब ये पूरों को टोटल करो. -7 कैलकुलेटर के ऊपर -7, पहले माइनस प्रेस करो फिर 7, देन -2, देन +15, +7, -19, +10, -13, -2, +28, +8. एक साथ स्ट्रेच में कैलकुलेट करना. पूरे माइनस प्लस को अलग अलग नहीं करना. फ्रॉम स्टार्टिंग यू स्टार्ट कैलकुलेटिंग -7, -2, +15, +7 like that. You will get the total 25. Now you have made all the calculations. Simply you have to substitute the values in the formula. You have to remember the formula. Actual mean का formula यहाँ, actual standard deviation का formula यहाँ है और assumed mean से अगर deviations लेंगे तो formula will change. Now standard deviation is equal to summation d square by n minus summation d by n whole square under root. Summation d square by n minus summation d by n whole square अंडर रूट. तो समेशन डी स्क्वायर कितना है? 1809 और n का वैल्यू कितना है? 10 है. तो 1809 डिवाइडेड बाय 10 यू विल गेट 180.9. उसी तरह 25 बाय 10 होल स्क्वायर. तो कैलकुलेट कैसा करेंगे? पहले 25 डिवाइडेड बाय 10 यू विल गेट 2.5. 2.5 into 2.5 you will get 6.25.
6.25. तो 180.9 minus 6.25 you get 174.65. Under root डाल दो, standard deviation 13.21. So you can clearly see the difference when deviations are taken from actual mean and when deviations are taken from assumed mean. Actual mean का formula summation x square by n under root, very small formula. लेकिन actual mean से deviations तब लेंगे जब यह whole number में रहा तो. When mean is in whole number, we take the deviations from actual mean. This formula. अगर ये mean whole number में नहीं है, fraction में है, तभी भी ये मेथड से जा सकते हैं. लेकिन जितना टाइम यहां लगेगा इसका 4 टाइम्स ज्यादा लगेगा. अगर ये 10 मिनट्स में अगर खत्म हो रहा तो 40 मिनट्स में खत्म होगा एक्चुअल मीन के फॉर्मूले, ये फॉर्मूले से कर जाएंगे. तो टू रिड्यूस द टाइम वी हैव टेकन अज्यूम्ड मीन. अज्यूम्ड मीन यहां पर 52.5 है तो इसके करीब वाला वैल्यू 50 है. तो 50 से मैं पूरा डिविजन्स x माइनस a is 50. तो ये पूरा सब. Now square it. We'll get the answer. Little bit of practice is required. Now, 23rd problem. From the following information, compute standard deviation. Individual values are given. Standard deviation we have to calculate just like the previous problem. 25, 22, 28, 26, 35, like that all the values are given. Calculation of standard deviation. X values problem में दे दिया. The total of all the x values summation x is 300. 300 आ. n is पहले मीन मालूम कर लेंगे. मीन का फॉर्मूला summation x bar is equal to summation x by n. तो 300 divided by 12. If you count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 numbers है. n is equal to 12. तो 300 by 12, 25. We are lucky. We got the actual mean is in whole number. Actual mean whole number में जैसा यहां पर था. अब डिविएशंस लेना हमको आसान है. ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे समेशन x स्क्वायर बाय n. ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे. ये फॉर्मूला तो अप्लाई करेंगे जब फ्रैक्शन में रहा तो. बट हियर वी गॉट होल नंबर 25. तो विल टेक स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X माइनस x बार. x बार इज 25. तो x माइनस 25. 25 माइनस 25 0. 22 माइनस 25 माइनस 3. 28 minus 25 3. 26 minus 25 1. Like this you find out all the differences. X minus x bar. Now square it. 0 square 0. 3 square 9. Minus into minus will become plus. 3 3s are 9. 1 1s are 1. 10 10s are 100. 5 5s are 25. 3 3s are 9. 15 into 15 225. 5 5s are 25. 7 7 49. 6 6 36. The total of x square is 488. Now simply we substitute in the formula standard deviation summation x square by n. 488 divided by 12 under root. So after root we are getting 6.377 or we can write 6.4. 6.377 भी लिख सकते हैं या round off करके 6.4 भी बना सकते हैं. That's not an issue. 24th problem. Calculate standard deviation and its coefficient from the following data. X values are given, frequencies are given. ये problem discrete series का है. Last 3-4 problems we have done only on individual series, but now it is a discrete series and we are required to calculate standard deviation. X values 2, 4, 6, 8 and frequencies are 5, 15, 20, 25. It's a discrete series. Calculation of standard deviation and its coefficient. X values are given in the problem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 and frequency values are given 5, 15, 20, 25, 25, 28. That's all. पहले क्या करेंगे? मीन मालूम करना है. स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिक्वायर मीन, देन डिविएशंस फ्रॉम मीन. राइट? तो डिस्क्रीट सीरीज में मीन मालूम करने का फॉर्मूला fx, f into x. तो मल्टीप्लाई करेंगे f into x. 2 into 5 10. 4 into 15 60. 6 into 20 120. 8 into 25 200. ये पूरे मल्टीप्लाई करें तो fx आ गया. Summation fx is 1000 and n the total of frequency is 118. तो mean x bar is equal to summation fx by n. 1000 by 118 8.475. Again we got the actual mean in fraction. अब ये मीन फ्रैक्शन में आया
तो फर्स्ट मेथड से जाएंगे तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा अगर ये डायरेक्ट मेथड से अगर करेंगे तो। अब इनडायरेक्ट मेथड से करें तो टाइम सेव। तो इनडायरेक्ट मेथड क्या है? assumed mean. We take the deviations from assumed mean. तो एक्चुअल मीन यहां पर 8.475 आया, तो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं which should be nearest to the actual mean, that will be better. जितना करीब वाला वैल्यू लेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो मैं राउंड ऑफ करके उसको 10 बना दिया। तो let the assumed mean be 10, तो a is equal to 10। सो आपके माइंड में आएगा क्यों ना 8 ले, क्यों ना 9 ले, बिल्कुल ले सकते हैं। यू विल गेट द सेम आंसर, you will get the same answer whether you take 8 or 9, but I take 10 because easily we can find out the difference. अगर 10 ले लिया assumed mean तो difference मालूम करने में difficulty नहीं होती, इसीलिए I have taken 10. Now d is equal to x minus a, x minus 10, a is assumed mean 10, तो x का वैल्यू क्या है यहाँ 2, 2 minus 10 minus 8, 4 minus 10 minus 6, 6 minus 10 minus 4, 8 minus 10 minus 2, 10 minus 10 0, 12 minus 10 2, 15 minus 10 5, ये d क्या वैल्यू है। Now we require fd, multiply the frequency with the deviations, fd। तो देखिए फ्रीक्वेंसी यहां पर है और d यहां पर है, तो 5 into 8, 5 8s are 40, plus into minus will be minus। Similarly 15 into 6, 90, plus into minus is minus. Then 20 into 4, 80, plus into minus minus. 25 into 2, 50, plus into minus minus. अब 25 into 0, 0. 20 into 2, 40. 8 into 5, 40. तो ये चार वैल्यूज माइनस में है और बाकी के तीन वैल्यूज ये पॉजिटिव है, राइट। अब इसका टोटल करेंगे तो कैलकुलेटर के ऊपर -40, -90, -80, -50, +40, +40 करिए एक साथ स्ट्रेच में, -180 आएगा। अब स्क्वायर एफडी स्क्वायर, नॉर्मली हियर स्टूडेंट्स विल कमिट द मिस्टेक। एफडी स्क्वायर का मतलब ये एफडी को स्क्वायर कर देते, 40 को स्क्वायर कर देते, रॉन्ग। एफडी स्क्वायर का मतलब एफडी इंटू डी, या स्क्वायरिंग खाली डी को है, एफ को स्क्वायर नहीं है, एफ को स्क्वायर नहीं है। एफ डी स्क्वायर का मतलब एफ इंटू डी इंटू डी, एफ इंटू डी इंटू डी। तो डी को स्क्वायर करना है, एफ को स्क्वायर नहीं करना है। तो हम कैसा मालूम करेंगे एफ डी स्क्वायर को? एफ डी इंटू डी, एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डी इंटू डी। तो यहां एफ डी है और ये डी है, तो माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस। 40 इंटू 8 320, 90 इंटू 6 540, 80 into 4 320, 50 into 2 100, ये माइनस इंटू माइनस सब प्लस हो गया है। 0 into 0, 2 into 40 80, 5 into 40 200। Now take the total of fd square, you will get 1560। Now we apply in the formula to get the standard deviation. So standard deviation is equal to summation fd square by n minus summation fd by n whole square अंडर रूट। देखिए समेशन एफ डी स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एफ डी बाई एन होल स्क्वायर अंडर रूट। तो पहले एफ डी स्क्वायर क्या वैल्यू है 1560, एन का वैल्यू क्या है 118, तो 1560 डिवाइडेड बाई 118, ये डिवाइड कर लिया तो आपको 13.22 आ जाएगा। माइनस ये माइनस 180, ये माइनस को स्क्वायर करने से पॉजिटिव होता, प्लस होता, माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस। तो 180 डिवाइडेड बाई 118, पहले क्या करेंगे 180 डिवाइडेड बाई 118, जो भी वैल्यू आया इनटू इज इक्वल टू मार दो, उसको स्क्वायर करना है, वी हैव टू स्क्वायर इट। तो 180 डिवाइडेड बाई 118 इज इक्वल टू मार दे, इज इक्वल टू मार दे। तो एक वैल्यू आ गया, उसको स्क्वायर करना है तो इनटू इज इक्वल टू मार दे। आई विल शो इट ऑन द कैलकुलेटर। 180 बाई 118, तो पहले क्या करेंगे 180 डिवाइडेड बाई 118 इज इक्वल टू, एक वैल्यू आया, अब इसको स्क्वायर करना है तो इनटू इज इक्वल टू मार दीजिए, यू विल गेट स्क्वायर 2.3269, 2.3269। तो 13.22 minus 2.3269 you will get 10.8931 अंडर रूट। रूट करने के बाद आपको आएगा 3.3,
This is the standard deviation. We got the standard deviation. But we are required to calculate CV, coefficient of variation. So standard deviation divided by mean into 100. So standard deviation is 3.3, mean is 8.475. Remember, actual mean we should take, not assumed mean. खाली स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करने के लिए assumed mean लिए, अब assumed mean को नहीं लेना, actual mean लेना. The actual mean is 8.475 into 100. 38.94. This is the coefficient of variation. So in these problems 21, 22, 23, 24, four problems, we have seen how to calculate standard deviation for individual series and also for discrete series. When deviations are taken from actual mean and when deviations are taken from assumed mean. So after watching the lecture, you got some confidence, do the problem yourself independently. Then only you can get the full command on the problems. Now we'll start problem number 25. 25th problem, you see carefully. Find the standard deviation for the following distribution. X values are given and frequencies are given. So again, it's a discrete series. So we have to find out standard deviation. See carefully, calculation of standard deviation, X values are given in the problem, frequencies are given. So it is a discrete series. The total of frequency is 100. Multiply F into X. 5 3s are 15, 15 into 10, 150, like that. The total of summation Fx is 3700. Once we get summation Fx, easily we can find out the mean. Mean x bar is equal to summation Fx by n, 3700 by 100, 37. So fortunately we got whole number, the mean whole number. So we can take the deviations from actual mean. There is no need for assuming the mean. Actual means are deviations लेंगे. Small x is equal to capital X minus x bar. Capital X minus 37. X bar is 37. तो देखिए 5 minus 37 minus 32. 15 minus 37 minus 22. 25 minus 37 minus 12. 35 minus 37 minus 2. Like this you calculate the deviations. Small x are. Now multiply f into x. Multiply frequency with x. 3 into 32 is minus 96. क्योंकि माइनस है. Plus into minus will become minus. Plus into minus will become minus. 10 into 22, 220. Plus into minus, minus. 20 into 12, 240. Plus into minus, minus. 30 into 2, 60. अब यहाँ से सब प्लस है. 15 into 8, 120. 12 into 18, 216. 10 into 28, 280. That's all. तो fx मालूम कर लिए. अब fx को स्क्वायर करना है. तो fx स्क्वायर का मतलब fx into x. Don't square fx. डायरेक्टली अगर fx को स्क्वायर कर देंगे तो योर कैलकुलेशंस विल बी रॉन्ग. ये f को भी स्क्वायर हो जाता. fx स्क्वायर का मतलब f into x. तो स्क्वायरिंग खाली x को हो रही, f को नहीं हो रही. तो सिंपली fx स्क्वायर का मतलब fx into x. fx into x. 96 into 32, 3072. 220 into 22, 4840. Minus into minus will become plus. ये minus into minus will become plus. तो सारे वैल्यूज प्लस में आ गए. ये दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर लिए. समेशन fx स्क्वायर 23,600. नाउ स्टैंडर्ड डिविएशन. समेशन fx स्क्वायर बाय n. समेशन fx स्क्वायर 23,600 डिवाइडेड बाय 100. तो पहले डिवाइड कर लो, उसके बाद रूट कर लो, यू विल गेट 15.36. दैट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन. दिस इज प्रॉब्लम नंबर 25. Now see the 26th problem. The following table gives the number of finished articles turned out per day by different number of workers in a factory. Find the mean value and the standard deviation of the daily output of finished good articles. Number of articles we can take it as x, and number of persons we can take it as f, frequency. So x values are 18, 19, 20, 21, 22, and number of persons f 3, 7, 11, 14, like that. Again, it is a discrete series. Calculation of mean and standard deviation. Number of articles x, 18, 19, 20, 21, all the values given. Number of persons, frequency 3, 7, 11, 14, 18. The total of the frequency n is equal to 100. Now first thing, multiply f into x. ये fx की जरूरत पड़ती है mean मालूम करने के लिए. For calculating mean we need fx.
तो 18 into 3, 19 into 7, 20 into 11, we got fx values. The total summation of x is 2238. Now mean x bar, summation of x by n, 2238 divided by 100, 22.38. We got the actual mean in fraction. Actual mean fraction में है, तो मैं assume कर लूंगा, कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए I will make the assumed mean. Let the assumed mean be 22. मैं डायरेक्टली 22 ले लिया, 22.38, क्योंकि 22 यहाँ पर है. Easily we can find out the calculation. You can take even 21, 20, anything you can take. So a is equal to 22. तो d is equal to x minus a. यहाँ पर x लिया था क्योंकि एक्चुअल मीन से डिविएशंस थे. एक्चुअल मीन से डिविएशंस लिए थे, लेकिन यहां पर assumed मीन से डिविएशंस ले रहे, इसीलिए मैं डिफरेंशिएट करने के लिए d ले लूं. d is equal to x minus a. a is 22. तो x minus 22, 18 minus 22 minus 4, 19 minus 22 minus 3, 20 minus 22 minus 2, 21 minus 22 minus 1, 22 minus 22 0, 23 minus 22 1, 2, 3, 4, 5. तो d आ गया. अब मल्टीप्लाई करेंगे f इंटू डी, फ्रीक्वेंसी इंटू डी. 3 4s are 12 प्लस इंटू माइनस माइनस, 7 3s are 21 प्लस इंटू माइनस माइनस, 11 2s are 22 प्लस इंटू माइनस माइनस, 14 इंटू 1 14 प्लस इंटू माइनस माइनस, 18 zeros are 0, 17 into 1, 13 into 2, 8 into 3, 5 into 4, 4 into 5. ये FD आ गया. अब FD स्क्वायर करना है तो FD इंटू डी, 12 into 4 48, 21 into 3 63, 22 into 2 44, 14 1. ये माइनस इंटू माइनस सब प्लस हो गया. उसी तरह ये सारे वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लो, FD स्क्वायर आ गया 490. तो स्टैंडर्ड डिविएशन समेशन FD स्क्वायर बाई n माइनस समेशन FD बाई n होल स्क्वायर अंडर रूट. तो FD स्क्वायर 490, n is 100, तो 490 by 100. FD is 38, 38 by 100 whole square. तो 490 by 100 you will get 4.9. 38 by 100, पहले 38 divided by 100 करेंगे 0.38 आएगा. तो 0.38 into is equal to 0.144. So standard deviation 2.18 और round off करके 2.2 भी ले सकते हैं. You can keep it 2.18 or you can take it as 2.2. This is 26th problem. Now see the 27th problem. In a survey of chemical industries, following data is collected. Calculate its standard deviation and its coefficient of variation. So we have to calculate the standard deviation as well as CV. Level of profit X, number of companies F, frequency. So we are given X values 10, 15, 20, 25, 30, 35. These are the discrete. This is the discrete series. Number of companies. Now see here. Calculation of standard deviation and coefficient of variation. Level of profit X 10, 15, 20, 25, 30, 35. Number of companies frequency 15, 10, 15, 8, 6, 1. Total is 55. It is given in the problem. Now first we multiply fx, f into x. 15 into 10, 150. 10 into 15, 150. 15 into 20, 300. Like this you multiply and find out fx. fx 1015. N is 55. So 1015 divided by 55, 18.45. The actual mean is in fraction. So we have to take the assumed mean. अब let the assumed mean be 20. 18.45 के करीब वाला वैल्यू कोई भी assume कर सकते हैं, मैं 20 ले लिया. तो a is equal to 20. Now d is equal to x minus a, x minus 20. तो अब x क्या है यहाँ पर 10 है. 10 minus 20 minus 10, 15 minus 20 minus 5, 20 minus 20 0, 25 minus 20 5, 30 minus 20 10, 35 minus 20 15. तो ये d आ गया. Now multiply करेंगे f into d. तो 15 into minus 10 minus 150, 10 into minus 5 minus 50, 15 into 0, 8 5s are 40, 6 10s are 60, 1 15s are 15. तो टोटल कर दो fd का minus 85, minus 150, minus 50, plus 40, plus 60, plus 15, minus 85. अब fd square, fd into d, 150 into 10, 1500, 50 into 5, 250, 0, 5 into 40, 200, 10 into 60, 600, 15 into 50, 200. The total is 2775. So we got summation fd square, we got summation fd.
Now substitute in the formula. Standard deviation summation FD square by n minus summation FD by n whole square under root. FD square 2775 divided by 55 और FD कितना है summation FD minus 85 by 55 whole square under root. तो 2775 divided by 55 you'll get 50.45 and 85 divided by 55 ये माइनस को स्क्वायर करने से प्लस हो जाएगा तो 85 divided by 55 into is equal to स्क्वायर करना है you'll get 2.38843 subtract कर दो रूट कर दो you'll get 6.93 this is the standard deviation. So we have completed 27 problems.